Today we do some other sums of standard costing. Sum number 1. From the following data, calculate material variances. Standard information and actual information is given. In standard information, quantity 400 kg and price rupees 2 per kg, and in actual quantity 480 kg and price rupees 1.50 per kg. Here we calculate three variances: material cost variances, material price variances, and material usage variances. So for this, first we have to prepare a table. So there is a column of standard and actual. In standard there are two columns, quantity and price, and also in actual two columns, quantity and price. Now we write from our information that standard quantity is 400 kg and price rupees 2 per kg. So we write in standard column quantity 400 kg and price rupees 2 per kg. And in actual column we write 480 kg and price rupees 1.50 per kg. Now we calculate material cost variance. The formula of material cost variance is SQ into SP minus AQ into AP. Here SQ means standard quantity and SP means standard price, and AQ means actual quantity and AP means actual price. So here we write in short form. Okay. So now let's write SQ. So SQ is 400 kg and SP is rupees 2 per kg, and AQ is 480 kg and AP is 1.50 per kg. So here we write now 800 minus 720 rupees. So we write rupees 80. It's a favorable answer. So we write in bracket favorable like F. Now we calculate second variance. It's a material price variance. So there is a formula of price variance. AQ ब्रैकेट में SP minus AP. So here actual quantity is 480 kg and in bracket we write SP rupees 2 per kg and AP rupees 1.50 per kg. So 480 bracket में 0.50, so we get rupees 240, which is also favorable. So here rupees 2 is standard price and actual price is 1.50, so 50 paisa is our benefit, so it's a favorable variance. Now usage variance. तो material usage variance की formula SP bracket में SQ minus AQ. So here standard price rupees 2 and in bracket standard quantity 400 kg minus actual quantity 480 kg. So we got 2 ब्रैकेट में
minus 80. So we got usage variance rupees 160, which is unfavorable because here actual quantity is more than standard quantity. यानी हमने जो डिसाइड किया था उससे ज्यादा क्वांटिटी यूज हो रही है. ओके, नाउ वी टैली फॉर दैट कि भाई कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू प्राइस वेरिएंस प्लस यूसेज वेरिएंस होता है या नहीं होता है. सो वी राइट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जिसके दो पार्ट है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस. तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ₹80 which is favorable. Material price variance ₹240 which is also favorable, and material usage variance which is ₹160 unfavorable. So here price variance plus usage variance, so you get a answer of cost variance और ये टैली होना ही चाहिए. Okay, clear? Now we move to sum number 2. It was decided that 10,000 kg of goods at a price of ₹5 per kg would be used to produce 2,000 units in one factory. Now when the actual 2,000 units were produced, it was found that 11,000 kg of goods worth ₹5.50 per kg were used. Find the variances of materials. So here also we find material cost variance, material price variance and material usage variance. And for this, first we have to prepare a table, and there is a 2 columns, standard and actual. In standard there is quantity and price, and also in actual quantity and price. Now for standard information, here we see that 10,000 kg of goods is used at ₹5 per kg, and we produce 2,000 units. Okay, so we write this information in standard column. So 10,000 kg, price ₹5 per kg, and production is 2,000 units. Now as per actual information, 2,000 units were produced, 11,000 kg of material used, and price is ₹5.50 per kg. So we write this information in actual column. So 11,000 kg, price 5.50 per kg, and production is here also 2,000 units. Okay, so here both production is same. So now we calculate three variances. First, material cost variances is equal to standard quantity into standard price minus actual quantity into actual price. So standard quantity 10,000 kg into price 5 rupees minus actual quantity 11,000 kg and price 5.50 per kg. So here 50,000 minus 60,500. So we got answer rupees 10,500 unfavorable. Okay. Now second variance
material price variance is equal to actual quantity ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस minus actual price. So here actual quantity 11,000 kg ब्रैकेट में standard price rupees 5 minus actual price rupees 5.50. So 11,000 into ब्रैकेट में minus 0.50. So we got answer rupees 5,500 unfavorable. So here we say that now material usage variance is 5,000 because your cost variance is rupees 10,500 less material price variance 5,500 unfavorable. So your material usage variance is also rupees 5,000 unfavorable. ये आंसर आना ही चाहिए. Now we have to check it. Now third variance material usage variance. तो is equal to standard price ब्रैकेट में standard quantity minus actual quantity. So standard price is rupees 5, standard quantity 10,000 kg minus actual quantity 11,000 kg. So standard price 5 ब्रैकेट में minus 1,000 which is the difference of standard quantity and actual quantity. So now we got answer rupees 5,000 unfavorable. Now here also we tally that cost variance is equal to price variance and usage variance. So material cost variance जिसके दो पार्ट material price variance and material usage variance. Now material cost variance is rupees 10,500 which is unfavorable and material price variance rupees 5,500 unfavorable and usage variance rupees 5,000 which is unfavorable. तो देखिए टैली हो गया. Okay, this one is minus 5,000, this one is 5,500 and here we get answer minus rupees 10,500. Okay, so we tally that कि भाई cost variance is equal to price variance plus usage variance. Sum number 3. It was decided that 3 kg of goods costing rupees 2 per kg would be used to produce 1 unit in a factory. Actual 400 units were produced during March 2020 using 1,240 kg of goods at a price of rupees 1.80 per kg. Calculate material variances. So first we have to prepare a table. So there is a 2-column standard and actual. In standard column there are another 2-column quantity and price, and also in actual there are 2-column quantity and price. Now we read carefully. It was decided that 3 kg of material costing rupees 2 per kg would be used to produce 1 unit. Yani standard information is given for 1 unit and 3 kg of goods
costing rupees 2 per kg would be used. So we have to write in standard information that in quantity 3 kg, price rupees 2 per kg, and production 1 unit. Now we read that actual information 400 units were produced and 1240 kg of goods is used at a price of rupees 1.80 per kg. So this is actual information and we write in actual column. So quantity 1240 kg and price 1.80 rupees per kg. And production is 400 units. Now here both information is given different. Standard information is given for 1 unit produced and actual information is given for 400 units produced. So it is not possible to compare these two. So now we have to convert standard information of 1 unit into 400 units because production is differ. So we have to prepare a column of revised standard which is prepared between standard and actual. And the base of this column is production. So we have to transfer actual production in revised standard column. 400 units. Now we take a base of standard information. If we produce 1 unit, then use 3 kg of goods. So if we produce 400 units, so how many kg we have to use? So it's a 1200 kg and price is rupees 2 per kg. Okay. Now revise standard information becomes standard. And in formula, when we write standard quantity, then we considered 1200 kg. Okay. Now not a 3 kg. Clear? Because when we compare, production must be same. Okay. So now this information is not required now. Okay. Clear? Now revised standard become standard. So now we calculate first variance, material cost variance is equal to standard quantity into standard price minus actual quantity into actual price. So here standard quantity is 1200 kg into price rupees 2 per kg minus actual quantity 1240 kg and price rupees 1.80 per kg. So rupees 2400 minus rupees 2232. So we got favorable answer rupees 168. Okay. Now material price variance formula है is equal to
एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस actual price. So here actual quantity 1240 kg bracket में price standard price rupees 2 per kg minus actual price rupees 1.80 per kg. So we got 1240 kg into bracket में 0.20. So we got answer rupees 248 favorable. Now third variance, material usage variance. फॉर्मूला है इज इक्वल टू एसपी यानी स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी. सो स्टैंडर्ड प्राइस रुपीज 2 पर केजी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1200 kg and actual quantity 1240 kg. So standard price rupees 2 into minus 40. So we got a answer rupees 80 unfavorable. Okay. So now material cost variance जिसके दो पार्ट, material price variance and usage variance. So cost variance is rupees 168 favorable, price variance rupees 248 favorable and usage variance rupees 80 unfavorable. Okay. तो देखिए प्राइस वेरिएंस है 248. ओके. उसमें से यूसेज वेरिएंस को माइनस कर दीजिए. ओके. माइनस 80. सो यू गॉट ए आंसर रुपीज 168 फेवरेबल. ओके. सो इस तरह से हम इसको टैली कर सकते हैं. क्लियर. नाउ सम नंबर 4. Calculate material variances from the following information of a factory. Material उसमें A and B स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन में मटेरियल A 480 units at rupees 15 and actual information 600 units at rupees 14. And for material B standard information 360 units at rupees 12 and actual information 380 units at rupees 13. So we write this information in table. So we have to prepare two columns, standard and actual, and quantity and price, and material is A and B. So here production is not given, here only material is given, and there is a two types of materials. देखिए हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं. तो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन में हम लिखेंगे पहले 480 यूनिट्स एट रुपीज 15 फॉर मटेरियल A and for material B 360 units and price rupees 12. तो A और B का जब हम टोटल करेंगे तो इट्स बिकम मिक्स. So it's a 840 units. So this is mix. Okay. Here production is not given, but mix is given. Clear. Now in actual quantity, for material A, we have to write 600 units
and price rupees 14 per unit, and 380 units and price rupees 13 पर यूनिट। तो एक्चुअल के कॉलम में भी हम टोटल करेंगे तो एक्चुअल मिक्स हमें मिलेगा, तो इट्स 980 यूनिट्स। तो हियर mix is given, standard mix is 840 units and actual mix is 980 units। तो यहाँ हमें कौन सा कॉलम बनाना पड़ेगा? Which column we have to prepare? Yes, we have to prepare revised standard mix quantity. Okay? Because revised standard mix quantity का जो कॉलम है उसका बेस्ड है मिक्स। तो यहाँ पर हम रिवाइज स्टैंडर्ड का कॉलम नहीं बनाएंगे जो हमने अगले सम में बनाया था स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच। यहाँ पर हम रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी का कॉलम बनाएंगे जो एक्चुअल के बाद बनाना है। ओके, लास्ट में। तो इसका बेस मिक्स है तो हम एक्चुअल मिक्स ट्रांसफर करेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी के कॉलम में। तो इट्स 980 units. Now we take a base that mix is 840 units, तो उसमें A कितना होना चाहिए? 480 होना चाहिए। ओके, सो एक्चुअल 980 है मिक्स, तो उसमें A कितना होना चाहिए ये हमें फाइंड करना है। क्लियर? तो 840 मिक्स से 480 A, सो 980 एक्चुअल मिक्स है। How much of material A is used? So it's a 560, यानी 560 यूनिट्स ऑफ मटेरियल ए यूज होना चाहिए था। देखिए एक्चुअल 600 यूनिट्स यूज हुआ है, लेकिन कितना होना चाहिए था? 560 यूनिट्स। तो ये हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं मिक्स के हिसाब से। ओके, नाउ फॉर मटेरियल बी, 840 यूनिट से 360 यूनिट्स, so 980 यूनिट से हाउ मच? क्लियर? ओके, so you got an answer 420. Okay, clear? So now we calculate variances of material cost, material price, material usage, and also material mix variances and material sub usage variances. So 5 variances we have to calculate here. Now first, material cost variances is equal to standard quantity into standard price minus actual quantity into actual price. Now for material A, so 480 units into 15 minus 600 units into 14. So we got answer rupees 120, sorry. So we got answer rupees 1200 unfavorable. Now for material B, 360 units into 12 minus 380 units into 13. So we got answer rupees 620 unfavorable.
So total cost variance is rupees 1820 unfavorable. Now material price variance we have to calculate is equal to actual quantity ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस. तो फॉर मटेरियल ए एक्चुअल क्वांटिटी 600 यूनिट्स ब्रैकेट में ₹15 minus ₹14. So we got answer ₹600 favorable. And for material B 380 units ब्रैकेट में ₹12 minus ₹13. So we got answer ₹380 unfavorable. So total price variance is ₹220 favorable. Third material usage variance is equal to standard price ब्रैकेट में standard quantity minus actual quantity. So material A is equal to standard price ₹15 ब्रैकेट में standard quantity 480 and actual quantity 600 units. So we got answer ₹1800 unfavorable. Now for material B, standard price ₹12, standard quantity 360 units minus actual quantity 380 units. So we got answer ₹240 unfavorable. So total variance is ₹2040 unfavorable. Now fourth variance material mix variance. तो यहाँ पर मिक्स है इसीलिए इस वेरिएंस को हम कैलकुलेट कर पाएंगे. क्लियर? और मिक्स अलग अलग है तो इसीलिए हमने रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी का कॉलम ड्रॉ किया. ओके क्योंकि यहाँ पर मिक्स अलग अलग था. हियर इट्स 840 एंड एक्चुअल इज 980. सो मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी minus actual quantity. So for material A, standard price is ₹15. ब्रैकेट में revise standard mix quantity 560 units minus actual quantity 600 units. So we got answer ₹600 unfavorable. Now for material B, standard price ₹12, revised standard mix quantity 420 units minus actual quantity 380 units. So we got answer ₹480 favorable. So total mix variance is ₹120 unfavorable. And now last variance, it's a material sub-usage variance is equal to standard price ब्रैकेट में standard quantity minus revised standard mix quantity.
So for material A, standard price rupees 15, standard quantity is 480 units, and revised standard mix quantity 560 units. So we got answer rupees 1200 rupees unfavorable. Now for material B, standard price rupees 12, standard quantity 360 units, and revised standard mix quantity 420 units. So B is equal to 12 rupees bracket में 360 units minus 420 units. So we got answer rupees 720 unfavorable. So total variance rupees 1920 unfavorable. Clear? Now अब हम इसको टैली करेंगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जिसके दो पार्ट है प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस, और यूसेज वेरिएंस के दो पार्ट है मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस है हमारा रुपीज 1820 अनफेवरेबल। ओके, तो इसको हम लिखेंगे तो रुपीज 1820 अनफेवरेबल। फिर हम लिखेंगे प्राइस और यूसेज वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस है रुपीज 220 फेवरेबल एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस रुपीज 2040 अनफेवरेबल। तो यहाँ पर देखिए मटेरियल यूसेज वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस दोनों का हम टोटल करेंगे तो हमारा आंसर कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। ओके, अब हम मिक्स वेरिएंस और सब यूसेज वेरिएंस कितना है वो देखेंगे। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस है रुपीज 120 अनफेवरेबल एंड सब यूसेज वेरिएंस है रुपीज 1920 अनफेवरेबल। तो इसको भी हम लिखेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस रुपीज 120 अनफेवरेबल एंड मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस रुपीज 1920 अनफेवरेबल। तो देखिए मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस इन दोनों का टोटल करेंगे तो भी आपका आंसर यूसेज वेरिएंस आ जाएगा। सो क्लियर?